Hello everyone, I am Raksha Bharti and I am from Edujars coding classes. Okay, so today we will learn HTML. So let's get started. So basically HTML is hypertext markup language. जैसा कि आप लोग जानते हैं HTML जो है hypertext markup language है और इससे हम लोग वेबसाइट या वेब पेजेस डिजाइन करते हैं. सो अ सिंपल वेबसाइट आप जो भी अपने अराउंड आसपास देखते हैं, सो यू कैन डिजाइन इट एज वेल विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. सो व्हाट वी डू इन HTML, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी कोडिंग देख सकते हैं. इट्स वेरी इजी एंड सिंपल. आप यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप HTML लिख सकते हैं. इट हैज सम पेयर्ड टैग. तो पेयर्ड टैग का कंसेप्ट हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज पेयर्ड टैग. सो इट हैज सम स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग. As we can see, it starts as this HTML and ends with \HTML, that is opening and closing. So this is particularly paired tag. So ये है आपका HTML element. And जहाँ तक हम लोग बात करेंगे डिफरेंट वर्जन्स की, सो देयर इज अ वर्जन HTML5. सो उसके लिए वी नीड टू हैव दिस डॉक टाइप HTML. So we need to write this particular thing. Why? Because कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग HTML5 वर्जन यूज कर रहे हैं. After that, inside the HTML tag we have many tags like head and body. So जिस तरह से हम लोगों के पास head and body है, उसी तरह से HTML also contains the same thing. Okay, so this is head, and inside head we can have the title as well for the page, and title must be closed. Why? Because it is also a paired tag, and after that we need to close head tag also. एंड जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया, बताया कि हेड टैग के बाद वी हैव बॉडी टैग. सो व्हाट वी नीड हियर इज बॉडी टैग. सो इनसाइड द बॉडी टैग देयर मस्ट कंटेन सम एलिमेंट्स एंड देन वी कैन क्लोज द बॉडी टैग एज वेल, सच दैट इफ वी वांट हेडिंग और पैराग्राफ टू बी रिटन इनसाइड अ वेब पेज, है ना. एक वेब पेज आप देखते हो, सिंपल वेब पेज, तो उसमें आपको हेडिंग्स नजर आता है, ठीक है, एंड डिफरेंट इमेजेस आप देखते हो. सो जो भी आप कंटेंट अपने वेब पेज में डिजाइन करना चाहते हो, सो यू कैन हैव इट हियर इनसाइड द बॉडी. दैट इज सपोज H1. वी कैन राइट हियर नॉर्मल हेडिंग. ओके, after that we can close this H1. so what is H1? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि what is H1. so it is basically the heading. okay, it is the larger heading we have inside the HTML tag. okay, after that what next we can have inside the body, that is whatever content, जो भी आप content चाहते हो वो मैंने कहा कि body tag के अंदर आप लिख सकते हो. So inside it we can have different multiple paragraphs could also be written, but first of all a simple paragraph is written inside the P tag. Okay, so this is the P tag and we can have the paragraph here. Okay, after that we need to close the paragraph as well. And जैसा कि ये आप simple format देख रहे हो, this is a simple format to write the HTML code. So आज हम लोग HTML में इतना ही देखते हैं. After that we will continue in our next lecture.